सो आपका इंटरेस्ट कैसे बना पहली बार साइबर सिक्योरिटी में? पहली बार साइबर सिक्योरिटी टर्म पढ़ा तो साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली ऐसा कहीं पे मैंने कॉलेज करिकुलम में या किसी फ्रेंड से भी वो टर्म नहीं सुना था कभी भी। बट हुआ क्या था उस टाइम पे 9/11 अटैक्स हुए थे लाइक, तो ये सब एनालिसिस हो रहे थे। ऑफ कोर्स मेनी वर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बट कुछ सच भी था उसमें, लाइक हाउ वी वर डूइंग द कॉन्वर्जेशन। एंड व्हेन आई डिग डीपर आई गॉट टू नो कि दिस इज अ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो जो क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी है दैट वाज लाइक अ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। स्टार्टिंग जो जॉब करी और अब तक आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में काम किया? एज अ कंपनी भी देखा जाए तो कौन सी कंपनी में कौन सी जॉब रोल पे आपने किस टेक्नोलॉजीज पे काम किया है? तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, आई स्टार्टेड एज सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो सिक्योरिटी एनालिस्ट में गो थ्रू सम ट्रेनिंग और थोड़ा समझना था कि कैसे एंटरप्राइज वर्क करता है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपने इतने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में स्विच किया तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और एक पर्टिकुलर जो जॉब रोल पे आपने इंटरव्यू दिया है उसमें क्या आना चाहिए? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबका अपना होस्ट नितिश। आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ अपने ब्रांड न्यू पॉडकास्ट के साथ। आज के हमारे गेस्ट हैं निखिल। इस करेंटली वर्किंग एज अ सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। ये एआई सिक्योरिटी डोमेन में काम कर रहे हैं करेंटली, और हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। इनकी 12 पास्ट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या रहा है, कौन कौन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में इन्होंने काम किया है और क्या क्या डिफरेंट डोमेन्स में काम कैसे होता है ये जानेंगे बेसिकली। और इन्होंने रिसर्च पेपर लिखा है, कैसे रिसर्च पेपर लिखा जाता है। इन्होंने मास्टर डिग्री करेंटली कर रहे हैं एआई में। जॉब के साथ आप मास्टर डिग्री कैसे परस्यू कर सकते हैं, एआई कैसे साइबर सिक्योरिटी डोमेन को शेप कर रहा है, ये भी हम आज के पॉडकास्ट में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाय निखिल, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hi Nitish, thank you. Thanks for inviting me to your channel. My name is Nikhil and I come from Kota, Rajasthan, very famous for all the IITs and now for the Kota factory. So I'm sure कि आपने ये सब सुना ही होगा. What's so typical like Kota kind of environment I grew up in. I have been into cybersecurity from last almost 12 years. मेरा पूरा career started from cybersecurity. I right from my college days I got into like I got very passionate about this domain when I started learning. And since then, I've been working in different domains of cybersecurity, have been into application security, pen testing, red teaming, malware, deep web, blockchain, now working on AI and cloud security. So almost all the different domains I keep growing and learning. And I've been working on different domains, have been into consulting side as well as the product security sides, traveled almost all the different parts of continents, been there, stayed, learned their culture, and understand why cybersecurity is important to them, how they tackle cybersecurity issues. And now I'm using all this information, so all this experience, in order to ensure that India understand it. And I want to share my knowledge and my experience with everyone I'm interacting with here in India. And I'm trying to create the similar community here in India with the help of all the experts which I have interacted so far. सो आपका इंटरेस्ट कैसे बना पहली बार साइबर सिक्योरिटी में? अब उसको थोड़ा बताएं। So very, I think very mundane story and very interesting for me as well. I had पहले कभी सोचा नहीं था कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। लाइक एज अ न्यूबी आई नेवर हर्ड अबाउट दिस टर्म। और कॉलेज में तो तब होता ही नहीं था, मतलब 2010-11 में जब मैंने पहली बार साइबर सिक्योरिटी टर्म पढ़ा तो साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली ऐसा कहीं पे मैंने कॉलेज करिकुलम में या किसी फ्रेंड से भी वो टर्म नहीं सुना था कभी भी। बट हुआ क्या था उस टाइम पे 9/11 अटैक्स हुए थे, लाइक नॉट उस टाइम पे बट थोड़ा टाइम पे ही हुए थे पहले ही। तो इट वाज क्वाइट लाइव एंड देन बिकॉज इट वाज ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो चुका था जब वो अटैक्स हुए थे, तो देयर वर लाइक अ लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो आ रही थी। एंड लाइक देयर वर अ लॉट ऑफ न्यू ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स वर कमिंग अप। और मैं ऐसे ही कॉलेज में बैठा था लाइब्रेरी में एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम आर्टिकल्स ऑनलाइन। एंड तब मैंने इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा जिसमें क्रिप्टोग्राफी एंड सेगनोग्राफी का लाइक डिस्कशन कर रखा था कि टेररिस्ट ने कैसे ये दो डोमेन्स को यूज करके दे वर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट, ताकि जो दूसरे लाइक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो उनको लाइक देख ना पाए या फिर उनको पता ना चले, राइट। तो ये सब एनालिसिस हो रहे थे। ऑफ कोर्स मेनी वर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बट कुछ सच भी था उसमें, लाइक हाउ वी वर डूइंग द कॉन्वर्जेशन। एंड व्हेन आई डिग डीपर आई गॉट टू नो कि दिस इज अ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो जो क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी है दैट वाज लाइक अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट लाइक comes under the cyber security. And then मेरा इंटरेस्ट लगा कि हाँ ये समथिंग कुछ नया हो रहा है एंड लाइक इफ इट इज coming at this level जहाँ पे it can lead to a terrorist attack and with a country like US जो कि इतनी बड़ी सुपर पावर है, and if they are not able to detect it then definitely it is something to think about। और मेरा इंटरेस्ट भी बहुत आया उसको लेकर, तो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट। एंड फिर लाइक 1-2 महीने 3 महीने मैंने स्पेंड करे उसको बारे में पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड तब इतना ज्यादा कंटेंट था नहीं, मतलब कॉलेज में तो डेफिनेटली नहीं था बट ऑनलाइन बिकॉज इंटरनेट था तो देयर वाज डेफिनेटली सम कंटेंट अवेलेबल। और
कुछ लोग इंडिया में जो काम कर रहे थे वो भी मतलब थोड़े बहुत लोग थे, तो वो दे वर आल्सो सपोर्टिव, दे वर आल्सो शेयरिंग व्हाटएवर दे न्यू। सो इट बिकेम देन लाइक काइंड ऑफ ऑटो पायलट मोड, जो भी इंटरनेट पे था, वी वर जस्ट लाइक स्टडीइंग एंड ट्राइंग टू लर्न अबाउट इट। सो आप अपने कॉलेज के बारे में बताइए, कॉलेज कहाँ से किया, वहाँ पे क्या पढ़ा? सो मैंने कॉलेज, माय कॉलेज वाज एसकेआईटी जयपुर। जयपुर में मैंने आरटीयू, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, इट वाज अ कॉलेज, एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी एज कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। ओके, सो मेरे फर्स्ट ईयर में ब्रांच कंप्यूटर साइंस थी, बट सेकेंड ईयर में आई चेंज माय ब्रांच टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। क्यों किया? आई थिंक यू ऑलरेडी वुड हैव गेस्ड इट, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। वो ऐसा लग रहा था कि बहुत कोर फील्ड्स हैं ऑल। साइबर सिक्योरिटी उस टाइम पे किसी ने सुना भी नहीं था, और कंप्यूटर साइंस अगेन लाइक इतना पॉपुलर उस टाइम पे। कुछ कुछ ब्रांचेस थी, बट अगेन लाइक पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उनको इतना ज्यादा आइडिया नहीं रहता, तो डेफिनेटली दे वर नॉट लाइक कंफर्टेबल विद कंप्यूटर साइंस, वाइल आई न्यू कि कंप्यूटर साइंस इज द बेस्ट थिंग फॉर मी। तो मेरा ये भी था कि लाइक कॉलेज, क्योंकि इट वाज लाइक अ टियर 3 कॉलेज, इट वाज अ स्टेट कॉलेज, सो आई न्यू कि कॉलेज से तो डेफिनेटली मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। लाइक साइबर सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं देख भी रहा हूँ, तो इट विल बी मोर अराउंड लाइक माई सेल्फ जर्नी विच विल बी डिफाइनिंग, अगर मुझे कुछ करियर भी स्टार्ट करना है। तो आई वॉज कंफर्टेबल विद एनी ब्रांच विच आई वॉज हैविंग, तो मैंने फर्स्ट ईयर में टॉप किया था, एंड उसकी वजह से आई गॉट एन ऑप्शन टू चेंज माई ब्रांच एंड आई स्विच्ड इट टू इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड इट डिडंट मैटर फ्रैंकली फॉर मी, मतलब क्योंकि साइबर सिक्योरिटी ना कंप्यूटर साइंस में था ना इलेक्ट्रॉनिक्स में था, तो मुझे पढ़ना तो खुद से ही था। So I ended up studying another 4 years myself about cybersecurity and all those things which were there. सो आपका प्लेसमेंट कैसे हुआ, उसके बारे में बताइए। आउटसाइड था, इनसाइड था? सो या मतलब कॉलेजेस में हमारे साइबर सिक्योरिटी की उस टाइम तक क्या है, थर्ड ईयर तक मैं खुद भी बहुत एक्टिव था साइबर सिक्योरिटी में, एंड आई वाज ऑलरेडी इन टच विद अ लॉट ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंपनीज एज वेल एज पीपल हु आर वर्किंग इन इंडिया, क्योंकि बहुत छोटी कम्युनिटी, मतलब अब तो फिर भी वीसी के इतने लोग आ गए हैं साइबर सिक्योरिटी में, कंपनीज को लेके या लोगों को लेके, बट तब बहुत छोटा था, लाइक हैंडफुल ऑफ फोक्स। तो आई गॉट अ गुड नेटवर्क, और मैं तब लाइक बहुत एक्टिव भी था, क्योंकि मैंने खुद ने अपना क्लब वगैरह भी स्टार्ट कर रखा था कॉलेज में। आई वॉज टीचिंग माई सेल्फ, एंड मैं थोड़ा ट्रेनिंग्स और प्रोजेक्ट्स भी करता था फ्रीलांसिंग। तो उस टाइम पे मतलब कंपनीज, हमारे फाइनल ईयर में आई हेल्प्ड लाइक आर कॉलेज ऑल्सो टू गेट वन साइबर सिक्योरिटी कंपनी फॉर द प्लेसमेंट्स एज वेल। तो एक पुणे बेस्ड एक कंपनी थी विच केम फॉर आर टू आर कॉलेज फॉर द प्लेसमेंट्स, एंड आई वाज लकी इनफ टू गेट प्लेस्ड इन द कॉलेज एज वेल, इन द कॉलेज ड्राइव एज वेल, and I accepted the offer as well with them. But again, like normally जो होता है कि joining was like around 2-3 months away, and meanwhile, like I was waiting for this opportunity, I also got an opportunity for like a freelancing project in Africa. तो 2 महीने का एक प्रोजेक्ट था, जिसके लिए मुझे अफ्रीका जाने का लाइक मौका मिला। बीच में मेरे पास टाइम था जब तक मेरी वो नई जॉब स्टार्ट हुई थी, तो आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी, आई वेंट देयर, और वहां पे जाके मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, एंड लाइक आई like whatever I learned was very interesting for me, because it was my first professional experience, and that too outside India. और वहां पे उनको भी मेरा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे like 2 months की जगह फुल टाइम रख लिया। तो फिर next 4 year I was there in Africa, and that's where my professional journey started. And since I was working with like military, and I was working in a very protected environment, I think that was the best learning. It was a mix of various cultures, and I got to learn a lot about the basics of security. And when we work in such a protected zone, तब और ज्यादा समझ में आता है कि क्यों साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जहां से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था, टेररिस्ट अटैक से, नेशनल सिक्योरिटी से, स्टार्टिंग फर्स्ट जॉब अगेन इन दैट सेम डोमेन रियली हेल्प मी लाइक टू ensure that this is the right passion and domain for me, and then I started learning more and get my more hands-on experience. सो आपके इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? लाइक आपको कॉलेज से भी प्लेसमेंट मिल गई थी, आपने आउटसाइड भी ट्राई किया था, बट बेसिकली एज अ फ्रेशर इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सो उस टाइम पे तो क्या है, मतलब इतना ज्यादा था नहीं, तो ज्यादातर वो लोग ये देख रहे थे कि आपका इंटरेस्ट क्यों है इस डोमेन में। सो स्टार्टिंग वाज कि आपका इंटरेस्ट क्यों आया, लाइक आपने मुझसे पूछा कि इंटरेस्ट कैसे आया, राइट? तो जनरली इंटरव्यूअर्स का उस टाइम पे भी क्वेश्चन यही था कि आपका इंटरेस्ट क्यों आया एंड कैसे आया, लाइक हाउ डिड यू गॉट टू लर्न, क्योंकि उस टाइम पे कोई पढ़ता ही नहीं था इस बारे में। के अलावा देन लाइक आफ्टर दिस क्वेश्चन, आई थिंक द मेजर क्वेश्चंस वर दैट वाज लाइक क्वाइट फेमस दैट टाइम। लोग समझना चाहते थे कि व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीआईए, हाउ कॉन्फिडेंशियलिटी इज इंपॉर्टेंट, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटीज आर इंपॉर्टेंट, एंड फिर उससे के अलावा जैसे जो मेरा रोल था, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन सिक्योरिटी के रोल्स के लिए मैं अप्लाई करा था उस टाइम पे, आई वाज मोर कंफर्टेबल विद एपसेक रिलेटेड काइंड ऑफ डोमेन्स आल्सो। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाइक कौन से आप टूल यूज करते हो आप, मतलब काली लिनक्स उस टाइम पे फेमस थी, काली लिनक्स से भी पहले बैक वो चलती थी,
बैक ट्रैक कुछ तो एक लाइनेक्स दिया है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। देयर वाज काली से भी पहले एक पुरानी थी लिनक्स, तो उस पे हम लोग यूज करते थे, तो उससे रिलेटेड टूल्स वगैरह कि ये आपने ये टूल्स यूज किया है कि जैसे निक्टो वगैरह हो गया और नॉर्मल एनमैप वगैरह हो गया, इससे रिलेटेड कमांड्स वगैरह कौन से आप एप्लीकेशंस टेस्ट करी हैं, इससे रिलेटेड मतलब थोड़े क्वेश्चंस रहते थे। अगेन लाइक इतना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं था इंटरव्यू जितना अभी होता है, जहाँ पे वो प्रॉपर लाइक सीटीएफ टाइप के आपके कोडिंग राउंड्स होते हैं या फिर एक करे का एक हैकिंग राउंड होता है। जो मैंने अफ्रीका के लिए इंटरव्यू दिया था उसमें डेफिनेटली देयर वाज अ सीटीएफ राउंड। तो जैसे नॉर्मली एक उन्होंने एक इंडिया लेवल पे एक सीटीएफ करा था जिसमें वी हैव टू क्रैक एंड पार्टिसिपेट, और उसमें मेरा सेकंड रैंक आया था जिसकी वजह से मुझे वो प्रोजेक्ट मिला था। तो दैट वाज डेफिनेटली देयर। बट जनरली जो कॉलेज में आए थे वो लोग तो नॉर्मल लाइक इट वाज लाइक फर्स्ट राउंड वाज एप्टीट्यूड, सेकंड राउंड वाज अ ग्रुप डिस्कशन, और थर्ड राउंड जब पर्सनल इंटरव्यू हुआ उसमें इट वाज मोर अराउंड लाइक क्यों साइबर सिक्योरिटी का पैशन हुआ, एंड देन थोड़ा बहुत इधर उधर अबाउट सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो आपने स्टार्टिंग जो जॉब करी और अब तक आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में काम किया, कंपनी मतलब एज अ कंपनी भी देखा जाए तो कौन सी कंपनी में कौन सी जॉब रोल पे आपने किस टेक्नोलॉजीज पे काम किया है, वो एक बार ब्रीफ बता सकें कि लाइक सिक्योरिटी एनालिस्ट ये रोल प्ले करता है और सिक्योरिटी इंजीनियर का काम ये होता है, ताकि लोगों को समझ में आए डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी डोमेन्स में जो रोल होते हैं उसका क्या वर्क होता है। डेफिनेटली यार नितिश, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि अभी तो लाइक एंड आई थिंक अभी तो बाउंड्रीज बहुत अच्छे से डिफाइंड हुई है, मतलब एनालिस्ट, इंजीनियर, कंसल्टेंट, आई थिंक सब लोगों का जॉब डिस्क्रिप्शन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अकॉर्डिंगली उनका रोल भी डिफाइंड है। पहले इतना नहीं होता था, पहले तो मतलब डजेंट मैटर एनालिस्ट, कंसल्टेंट या क्या है, मतलब जो भी काम है सब एक ही काम कर रहे थे, बट जस्ट वो डेजिग्नेशन अलग अलग कर रखी थी। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, आई स्टार्टेड एज सिक्योरिटी एनालिस्ट। ठीक है, तो सिक्योरिटी एनालिस्ट में फर्स्ट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट रोल, तो ऑफ कोर्स लाइक आई हैड टू फर्स्ट लर्न, गो थ्रू सम ट्रेनिंग्स, और थोड़ा समझना था कि कैसे एंटरप्राइज वर्क करता है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो आई वाज मोर लाइक गोइंग थ्रू द रिपोर्ट्स ऑफ दिस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जो पेन टेस्टिंग वगैरह होती थी, वीएपीटी होते थे, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह के थ्रू जाना, रिपोर्टिंग करना। दोज वर लाइक बेसिक रोल्स एज एन एनालिस्ट। थोड़ा बहुत रिसर्च करना अबाउट न्यू वल्नरेबिलिटीज, जो अपने टेस्ट केसेस होते हैं उसको इम्प्रूव करना। तो जैसे वो ओएस टॉप 10 होते थे, तो 10 के अलावा 15, 20, 25 थोड़े और केसेस बढ़ाना कि ये टेस्ट कर सकते हैं, ये टेस्ट कर सकते हैं, तो उसको रिसर्च करके उसको इंक्लूड करना एंड देन उसको टेस्ट करना, उसके पीओसी बनाना। तो एज ए एनालिस्ट आई वाज डूइंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स मोर फॉर फर्स्ट 2 years. Then next I went into engineering mode. So I was working then as a security engineer, senior security engineer in the same company. Like after 2 years of experience, I got promoted and I started working as security engineer. उसमें मेरा role change हुआ where फ्रॉम एनालिसिस और रिपोर्टिंग से की जगह मैं थोड़ा टूलिंग्स में आ गया, जहाँ पे मैं टूल इंटीग्रेट करने लग गया। तो जैसे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अपने प्रोसेस होते थे, तो उसमें कैसे अपने सीआईसीडी में सिक्योरिटी टूल्स लाने हैं, जैसे डेवसेकऑप्स में कहाँ पे अपन सिक्योरिटी इंटीग्रेट कर सकते हैं, एसआईएम से रिलेटेड हो गया। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते थे, आईएम से रिलेटेड टूल्स हो गए, तो उन टूल्स को कैसे इंटीग्रेट करना है। टूल को थोड़ा एक बार आप ब्रीफ बता भी सकें कि क्या होता डेफिनेटली। तो जैसे टूल्स में अपन स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट से। तो जैसे अपन ऑक्टा और एक्टिव डायरेक्टरी यूज करते हैं, तो एक्टिव डायरेक्टरी और ऑक्टा वगैरह के जो ये आइडेंटिटी एक्सेस टूल्स होते हैं वो थोड़े इस अकॉर्डिंग रहते हैं, जहाँ पे आप यूजर को यूजर की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और सेट कर सकते हो, बट इसमें कितनी लेंथ का पासवर्ड सेट करना है, कैसे 2FA रखना है, ये सब जो एडिशनल सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है वो एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर करते हैं, वो आईटी वाले लोग नहीं करते या फिर वो एप्लीकेशन वाले लोग नहीं करते। तो जो ये बेसिक क्वालिटी लाइक कॉन्फ़िगरेशंस होती है इन टूल्स में, आइडेंटिटी एक्सेस में, उन सब का काम इंजीनियर करता था। जो उसको इंटीग्रेट करना, कि इंश्योर करना कि ये टू आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से उससे इंटीग्रेटेड रहे, यूजर्स इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के उसको एक्सेस कर पाए। ऐसा नहीं कि मतलब अगर आपके यूजर्स लेट्स से इंडिया में है, तो ऐसा नहीं कि कल को नॉर्थ कोरिया से किसी ने साइन इन किया तो वो भी एक्सेस कर पा रहे हैं इस चीज को। तो इंश्योर करना कि वो जो लोकेशन टैग्ड है वो सब इनेबल्ड है। तो ये सब चीजें जो होती है वो आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है आइडेंटिटी एक्सेस में। ऐसे ही नेटवर्क सिक्योरिटी के केस या एप्लीकेशन सिक्योरिटी में, जैसे आपकी वेब एप्लीकेशन है तो उसमें वैप को इंप्लीमेंट करना, तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स होते हैं। तो अभी जैसे तब के टाइम पे अलग अलग फायरवॉल्स होते थे अपने, तो वो फायरवॉल्स को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसमें लेयर 3 लेयर 7 पे कौन कौन से अपन को कॉन्फ़िगरेशन लगानी है कि डीडॉस ना हो, जो पैकेट्स आ रहे हैं वो एक लेजिटिमेट सोर्स से आ रहे हो, ऐसा नहीं कि जो आपने वाइट लिस्ट जो आईपी आपने
व्हाइट लिस्ट करके वहीं से आ रहे हो, ऐसा नहीं कि अपन ने कुछ पर्टिकुलर ऐसी कंट्रीज या कोई ऐसी जगह से आ रहे हो, वीपीएन से आ रहे हो। तो ये सब चीजें जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे आपके पास पैकेट्स आ रहे हैं, कैसे आप फिल्टरिंग कर रहे हो, उन सब चीजों को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करके आपको कॉन्फ़िगर करना होता है एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर। देन फिर अपन जैसे और जाते हैं टेस्टिंग में, तो पहले टेस्टिंग जैसे अपन करते थे मैनुअली बर्ब सुइट वगैरह से, उसके बाद आप थोड़ा ऑटोमेट करते हैं, जैसे आपने सैस्ट और डैस्ट करा, सिक्योर लाइक स्टैटिक एनालिसिस करा या डायनामिक एनालिसिस करा, जैसे चेक मार्क्स वगैरह या इस तरह के टूल्स लगा के, जहाँ पे कोड लिखते टाइम ही आपको वल्नरेबिलिटी पता चल जाए। और फिर आपने ऑटोमेटेड पेन टेस्टिंग कर लिया, मे बी बर्ब सुइट से, या फिर आपने कुछ भी इस तरह की लाइक टूलिंग्स लगा ले। अब तो आजकल तो मल्टीपल टूल्स है, उस टाइम पे तो एक या दो ही टूल्स हुआ करता था, तो इट वाज मच इजियर लाइफ देयर। नाउ अभी बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, तो डेफिनेटली थिंग्स आर बिकमिंग मोर इंटरेस्टिंग। फिर मॉनिटरिंग में जाके कैसे आपको एसआई में इंटीग्रेट करना है, सारे लॉग्स को इकट्ठा करके इंश्योर करना है कि आप उसको व्यू करो, डैशबोर्ड बनाओ। तो ये सारी चीजें जो होती थी, एज ए इंजीनियर आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। After this, I moved with Palladian Networks. Palladian Networks, which is now ATOS, it is acquired by ATOS, as working as a lead team lead there. और मैं उस टाइम पे रेड टीमिंग और जो पेन टेस्टिंग असाइनमेंट है फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स उनको लीड कर रहा था। सो आई वर्क विद लार्ज बैंक्स इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इन जर्मनी, यूरोप एंड इन मिडल ईस्ट, एंड आई वाज वर्क लीडिंग द रेड टीमिंग एंड ऑफेंसिव सिक्योरिटी टीम्स फॉर देम। ऑफेंसिव सिक्योरिटी इंजीनियर क्या करता है, और आई वाज टीम लीड बिकॉज आई ऑलरेडी हैड डेवलप्ड लाइक 4 5 years of experience by then. तो एज अ टीम लीड आई हैड टू इंश्योर कि मेरी टीम इज डूइंग व्हाट इज डिफाइंड इन द स्कोप ऑफ वर्क। मतलब ऐसा नहीं कि 4 चीजें बोली है तो आप 10 चीजें कर रहे हो, और उसकी जगह 5 दिन की जगह 10 दिन टाइम ले रहे हो, तो ऑफकोर्स वो मैनेजमेंट वाला टाइप था। बट अगेन लाइक आई वाज आल्सो गाइडिंग देम ऑन हाउ टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग्स, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था। सो आई वाज एबल टू गाइड देम अबाउट कैसे ये रेटिंग ऑपरेशंस को प्लान करना है, कैसे पेन टेस्टिंग करनी है, वो सारी चीजें आई वाज डूइंग दैट एज अ टीम लीड। आई वाज लीडिंग द कंप्लीट टीम। Then I moved with Quickie. Quickie, I joined them as a product security engineer. Product security में basically अभी तक मैं थोड़ा consulting side में था। Then with the Quickie, I got to work more at a product level. तो पहले जहाँ पे मैं कस्टमर सिक्योरिटी पे फोकस करता था, इसमें मुझे प्रोडक्ट पे फोकस करना था। तो माई इंटरेक्शन विद द कस्टमर वाज निल, बट माई इंटरेक्शन विद द डेवलपमेंट टीम या प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम वर इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना कि कैसे कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करता है और कैसे प्रोडक्ट को इंश्योर करना है कि वो सिक्योर रहे। एंड क्विकहील, एज यू नो कि कितना बड़ा प्रोडक्ट है इंडिया में, लाइक ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज आर यूजिंग क्विकहील एट अ पर्सनल लेवल, राइट, एट अ रिटेल लेवल। तो दैट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज वेरी हाई। और इंश्योर करना कि ऑल दीज न्यू मालवेयर्स, रैंसमवेयर अटैक्स व्हिच आर हैपनिंग, हाउ डू वी डिटेक्ट इट, हाउ डू वी इंश्योर के वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइज एंड द यूजर्स व्हिच आर यूजिंग आवर प्रोडक्ट आर नॉट कॉम्प्रोमाइज, इन सबको इंश्योर करना। तो उसमें सारी टीम्स के साथ मिलके बैठ के उस पर्टिकुलर माइंडसेट से सोचा, दैट वाज मेजर रिस्पांसिबिलिटी एज अ प्रोडक्ट सिक्योरिटी। अगेन लाइक आई विल से कि काम तो थोड़ा बहुत ऐसा ही था जो पहले भी कर रहा था, मतलब ऐसा कोई काम में चेंज नहीं था उस टाइम पे भी, बट माइंडसेट में चेंज था। बिकॉज माइंडसेट ये था कि पहले कस्टमर्स की जगह इस बार अपन अपने प्रोडक्ट को देख रहे थे, तो दैट इज वाज अ डिफरेंस। अपने प्रोडक्ट पे फोकस करना था रादर देन कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो कस्टमर्स के लिए अलग से टीम थी, बट मेरा रोल जो था, रोल वाज मोर फोकस ऑन द प्रोडक्ट, सो इसलिए प्रोडक्ट पे पूरा फोकस आ गया था। उसके बाद मैं पीडब्ल्यूसी थाईलैंड में मूव करा। पीडब्ल्यूसी वाज लाइक माय नेक्स्ट कंपनी, और उसका रीजन मेरा लिए ये था कि मैंने हर 2 2 साल में अपनी डोमेन चेंज करी थी। पहले जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस में था, उसके बाद में थोड़ा पेन टेस्टिंग में गया और रेड टीमिंग में गया। उसके बाद मैंने डोमेन चेंज करके थोड़ा प्रोडक्ट सिक्योरिटी, मालवेयर्स और डीप वेब साइट में गया। एंड देन 2017-18 में क्या है, ब्लॉकचेन बहुत पॉपुलर हो गई थी, ऑल थैंक्स टू क्रिप्टो करेंसी के। क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल एकदम से इतना जंप मारा कि एवरीबॉडी वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी। इट वाज लाइक अ एआई मार्केट राइट नाउ, जैसे एआई के बारे में अब सब बात कर रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज इनटू एआई। उस टाइम पे वो ब्लॉकचेन का हाल था कि एवरीबॉडी वाज वेब 3 है, एवरी अनदर स्टार्टअप वाज वेब 3 स्टार्टअप, राइट। तो आई वाज लाइक इनटू दैट वेव आल्सो, एंड आई वाज रियली बिलीवर ऑफ वेब 3, क्योंकि मैंने जब साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट किया था 2011 में, तब मैंने ब्लॉकचेन भी पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ब्लॉकचेन, एआई, ये सब मैंने मैंने इस पे रिसर्च पेपर भी लिखे थे अपने कॉलेज टाइम में। एंड माय रिसर्च पेपर्स आर ऑलरेडी पब्लिश ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज ओनली। उस टाइम पे मैंने ब्लॉकचेन और एआई इन सब पे रिसर्च किया था। तो ब्लॉकचेन वाज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एरिया फॉर मी। आई वर्क, इवन आई माइंड माय ओन बिटकॉइंस ड्यूरिंग 2012, जब लाइक ब्लॉकचेन स्टार्ट ही हुआ था। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी, तो आई वांटेड टू डू समथिंग इन दैट। बट इंडिया में उस टाइम पे ब्लॉकचेन पे इतना ज्यादा वर्क हो नहीं रहा था, मतलब इंडिया वाज एज यूजुअल लाइक कैचिंग अप थ्रू द न्यू टेक्नोलॉजी। तो उसमें 2 3 साल बाद ही आता, तो आई डिसाइडेड टू गेट लाइक मूव आउट ऑफ इंडिया, एंड आई गॉट अ रोल विद पीडब्ल्यूसी थाईलैंड, वेयर आई गॉट अ चांस टू
lead their emerging tech team. So I joined them as manager for their emerging tech team. And then I was working with, again, like the financial institutes, with large government banks and these kind of customers. And I was leading the complete blockchain and different emerging technology teams for them. Again, uska region was not limited to Thailand, but I was taking care of the complete ASEAN region for them. So ASEAN, mein, like different countries are there, Malaysia, Vietnam, and different countries are there. So I was working and leading the complete team for them in this region. वहां के बाद लाइक वहां पे थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आया लैंग्वेजेस का बिकॉज दैट लाइक दे वर नॉट वेरी इंग्लिश स्पीकिंग एंड आई पर्सनली लाइक टू स्पीक विद कस्टमर्स लाइक आई एम वेरी आउटगोइंग पर्सन तो मुझे कस्टमर से इंटरेक्ट करना है लाइक इन अ रोल वेयर यू आर इन कंसल्टिंग यू हैव टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर मुझे वहाँ पे हर मीटिंग में कोई ना कोई ऐसे ट्रांसलेटर लेके जाना पड़ता था तो इट वाज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल रोल फॉर मी बिकॉज like in a consulting if you are taking a translator with you then definitely it is not a best scenario क्योंकि you are not able to understand the customer neither customer is able to understand you तो वो मुझे थोड़ा गैप लग रहा था so I decided I had to move to some English speaking countries. And like I then joined Deloitte as a senior manager and I joined them to lead their cloud security and DevSecOps team. So like just after that, I think cloud security started booming. Cloud security was something which started like getting their interest in 2018-19. Some लोग cloud पे switch हो गए थे जैसे ही Web3 के like after Web3 like 1.5 2 साल का थोड़ा boom आया था उसके बाद everybody was moving to another technology and cloud was the next technology which I was very bullish about तो मैंने उसके बारे में पढ़ना start किया I got this role and then I was leading their complete cloud security and DevSecOps team for the APAC region तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जापान सिंगापुर के पब्लिक सेक्टर कस्टमर्स की जो सारी टीम है उसको आई वाज लीडिंग and I set the complete team. I myself did all these learnings, worked with various partners like Palo Alto, this Prisma Cloud and all these which were now very popular. उस time पे like they all were starting, like everybody was starting, including me. Everybody was like just trying to learn and do something new. So I think that was a very good time for me because उस time पे इतना pressure भी नहीं था क्योंकि like anyone else I was also learning. तो इंटरव्यू में भी मतलब इतना ज्यादा like जैसा अभी पूछते हैं बिल्कुल एडवांस लेवल पे जाके उस टाइम पे it was always like I think about the passion क्योंकि अभी भी like whenever I see when I try to always take new technology which is upcoming not ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो अभी चल रही है बट जो 2 साल बाद आएगी ऐसी टेक्नोलॉजी में बिलीव करता हूँ उसमें क्या होता है मेरा to get into the entry barrier reduce हो जाता है and it's easier for me to then further catch in तो यही मेरा लाइक फिलोसफी रहा है शुरू से आफ्टर डेलॉइट लाइक मेरे को नई टेक्नोलॉजी ढूंढनी थी 1.5 2 साल में तो आई फाउंड कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग इज द न्यू अपकमिंग टेक्नोलॉजी विच इज मोर अराउंड डेटा सिक्योरिटी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग सो आई फिगर्ड आउट बाय देन कि मतलब क्लाउड है क्लाउड में जा रहे हैं क्लाउड इज इनएविटेबल सबको क्लाउड में शिफ्ट करना है नाउ वी ऑल नो कि क्लाउड में जा रहे हैं सारे कस्टमर तो क्लाउड में जाने में सबसे बड़ा रिस्क है डेटा का क्योंकि यू कैन नॉट कंट्रोल द इंफ्रास्ट्रक्चर बट यू कैन कंट्रोल द डेटा तो डेटा को कैसे सिक्योर करोगे उसके लिए क्या नई टेक्नोलॉजी है तो उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग एंड कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग करके नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी तो आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर द कंपनीज आर वर्किंग इन दिस डोमेन एंड देन आई गॉट वन कंपनी फोटानिक्स व्हिच वर वर्किंग लाइक इट्स अ यूएस बेस्ड स्टार्टअप and I interviewed for them. I got selected as well, and that was a remote role, work from anywhere. So that was like an ideal case for me. कि अच्छी like I was getting a good payment, like working from anywhere, as well as I was working in a domain जो कि 4 5 साल बाद आने वाली थी. It was like a research R&D kind of a role for me. तो मेरे को नई टेक्नोलॉजी को काम करने का मौका मिल रहा था जहाँ से भी. So I joined them. I spent again like 2 2.5 years with them to understand the technology, go through it, and I think after that, I in my current role, which is like with Photonics, I joined them as a senior architect. So in the R&D department, and my main role was to understand the new technology and architect our solutions according to the new technology. तो जो भी हम लोग प्रोडक्ट शिप कर रहे थे, it was a product company. तो जो भी हमारे प्रोडक्ट जाते थे, it goes as per the new technology which we are working on, researching on जो हमारे इंजीनियर्स बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशंस को आर्किटेक्ट करते थे कि कैसे ये सिक्योरली शिप होंगे क्लाउड में. So that was my main role to design and architect all these solutions. And now with my current role with Ethos, I'm working as a product security architect. Again, it's a product company in US, and it's a completely different segment. It's like it's a insurtech kind of aggregator in US. It's a tech-based platform, and my role is here is to ensure the complete product architecture. So I'm taking like a strategical decision which will be impacting the next 2 3 years of the company. So it is not like a short-term kind of a decisions like कि pen testing कर रहे हैं या फिर we are doing
monitoring या this, but I'm more involved in very strategic decisions कि कौन से vendors को अपने को लेना है, किस particular क्लाउड में हमें मूव करना है, या इस तरह के जो strategic decisions है which will impact 2 3 years down the line. That is what I'm taking in my current role. So that has been my journey. अभी I'm spending more time around AI security क्योंकि as I think I figured out कि AI will again be a very game changer. So last 1.5 years, 2 years I spent around learning around the AI security. सो आपने इतने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में स्विच किया तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है डिफरेंट लेवल, और एक पर्टिकुलर जो जॉब रोल पे आपने इंटरव्यू दिया है उसमें क्या आना चाहिए, क्या पूछा आपसे? हाँ, सो लाइक स्टार्टिंग में मैंने आपको सिक्योरिटी इंजीनियर का जैसे बताया कि सिक्योरिटी इंजीनियर में तो बेसिकली उन्होंने टूल्स वगैरह का और बैक ट्रैक वगैरह का ये सब लिनक्स वगैरह की चीजें पूछी थी। आई थिंक वन कॉमन चीज अगर मैं शुरू से लेके एंड तक के अभी के रिसेंट इंटरव्यूज का भी बताऊं, तो एक चीज जो कॉमन रही है वो यही रही है कि सिक्योरिटी में लाइक सम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस अराउंड सिक्योरिटी रिलेटेड टू डेटा डेटा सिक्योरिटी कंसिस्टेंट रहा है कि डेटा सिक्योरिटी मतलब जो बेसिक होता है ना सिमेट्रिक असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में डिफरेंस। आई थिंक दिस इज द कॉमन क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द इंटरव्यूज फॉर मी, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। उसके अलावा आई थिंक विद द रोल इट विल डिपेंड, क्योंकि जैसे जब नेक्स्ट टीम लीड में मैं गया तो वहां पे द क्वेश्चन वाज मोर अराउंड द अप्रोच टाइमलाइन, कि आप कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो, आपका अप्रोच कैसा होता है प्रोजेक्ट को अप्रोच करने का, कस्टमर कैसे डील करते हो। तो वो थोड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एज अ लीड आप किस तरह से आपकी काम को अप्रोच करते हो, दैट वाज मोर like evaluation based compared to the technical part. The technical was all of course there, मतलब दो राउंड टेक्निकल के तो रहते ही हैं, but then the next focus was around the leadership side कि आप कितना अच्छे से टीम को लीड कर पाओगे, that was more thing. One more thing which is consistent in all the interviews is the CTF type. So हमेशा हर जॉब में the first 2 rounds has been like a technical round जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कोड लेके आपको like either you have to bypass it or either you have to crack it, उस तरह के कुछ ना कुछ rounds रहे हैं। अगेन लाइक फॉर ब्लॉकचेन बेस्ड जैसे कंपनी जैसे चेंज करी मैंने ब्लॉकचेन बेस में गए तो ब्लॉकचेन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस के आप कैसे आप जो आपकी स्कीमा होता है उसको इवेल्युएट करते हो, जो आपकी ब्लॉकचेन्स वगैरह है या फिर आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको कैसे ऑडिट करते हो, कौन से टूल्स यूज करते हो, कोई सिनेरियो से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी दे देते हैं, उस वल्नरेबिलिटी को आप कैसे एक्सप्लॉइट करोगे एंड देन कैसे उसको फिक्स करोगे। सो बोथ द थिंग्स, इट्स नॉट जस्ट एक्सप्लॉइटेबिलिटी बट आल्सो फिक्स कैसे आप करोगे। तो ये सारी चीजें बेसिकली इन्वॉल्व रही है हर रोल में। क्लाउड में गए तो क्लाउड से रिलेटेड के क्लाउड के क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट दैट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल इन क्लाउड, क्लाउड में क्या challenges हैं फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ टू इंश्योर दैट सिक्योरिटी इज अ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कस्टमर। ये सारे जो बेसिक चीजें हैं आई थिंक इट हैज ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी, एंड एज आई सेड लाइक फॉर मी the interviews has been a bit easier because I always moved early. So that early mover advantage which I told you about, right? I think it's much easier क्योंकि जब इंटरव्यूअर को भी पता नहीं होता उस डोमेन का तो they will particularly more reliant on आपका पैशन के बारे में and what you have done so far instead of what you knew about the current technology. So that is something which has helped me so far. करेंटली आप मास्टर भी परस्यू कर रहे हो एआई में, तो वो क्या परस्यू करने का क्या कारण रहा और क्या क्या लर्निंग रह रही हैं, और आप कैसे परस्यू कर रहे हो करंट जॉब के साथ? तो या मास्टर्स का डिसीजन इसलिए था क्योंकि लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू डू माय हायर ग्रेजुएशन, लाइक आई ऑलरेडी कंप्लीट माय बैचलर, सो आई डेफिनेटली वांट टू गो फॉर हायर डाउन द लेन टू वर्च मोर हायर एजुकेशन। और आई बट आई एट द सेम टाइम डोंट वांट टू लीव माय जॉब एज वेल, आई वांट टू कंटिन्यू माय जॉब बिकॉज आई एम रियली एंजॉयिंग व्हाट आई एम डूइंग। सो आई वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे मैं जॉब के साथ एमटेक वगैरह टाइप के कुछ डिग्री कर सकूं। So that's why I subscribed for Masters MTech with BITS Pilani. And the reason to do AIML was very easy because, as I said, like AIML, I think is something which is definitely coming and it will be changing the way we are doing everything in IT. So it was not a brainer that why I choose the AIML. I could have gone for cybersecurity, but cybersecurity का रीजन यही था कि cybersecurity में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं ऑलरेडी सीख चुका हूँ, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नया नहीं रहेगा कुछ सिखाने के लिए, राइट? It would be something which is almost like a bookish and theoretical knowledge, कुछ नया नहीं होगा। AIML is something which I have not like learned, it is everything which I learn is something new for me daily जो मैं मास्टर में पढ़ा हूँ, so that was the reason for doing it. And I think how
how it will be helping me was I was comparing it from the certificate. जैसे cyber security में certificate करना is a very common thing. कि everybody wants to do certificates, right? For me, I was comparing. I also have a lot of certificate, but I was comparing a certificate versus a full-time degree. What will be much beneficial me for a leadership role? Then I figured out that leadership में they are looking more for a person who understand the technology, who understand why this will be used, and that's why I feel कि 2 साल का जो कोर्स है मेरे लिए ये AIML का, it will giving me much more knowledge compared to a certificate which I pursue maybe in 3 months, 6 months. So that was like a major reason कि क्यों मैंने ये सर्टिफिकेट की जगह मास्टर्स को प्रेफरेंस दी। आपने इतनी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम किया, तो वर्क कल्चर कितना डिफरेंट लगा और कितना इम्पोर्टेंट है, एक बार इसके बारे में भी बताइए। लाइक आजकल के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक वर्क कल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड मल्टीपल रीजंस इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप फ्रेशर स्टार्ट करते हो लाइक यू आर राइट देयर इन योर इनिशियल जर्नी, तो वर्क कल्चर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट विल डिफाइन कि आप किस अकॉर्डिंग आपका करियर ग्राफ कैसा रहेगा एंड आप कितनी जल्दी लर्न करोगे एंड किन लोगों से लर्न करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है, मतलब आपके जो पीयर्स हैं सीनियर्स हैं, राइट, दे शुड बी स्मार्ट इनफ एंड दे शुड बी सपोर्टिव इनफ। वो जो अपन देखते हैं टॉक्सिक वर्क कल्चर्स का होता है कि they are going behind your back और वो politics वगैरह वो सब चीजें, that will is not good for anyone. That's what I feel like, and I've been into different companies and teams where this was common also, like ऐसा नहीं है कि this is something which is not common. तो I feel कि it is very important in that respect. मेरे cultures के according अगर बात करें तो I've been fortunate enough to be part of some good teams from the start itself. But yet again, there have been times where I've also a part of some cultures which I not enjoyed. And what I did was I was very clear about what I want in my like career perspective, journey perspective, and I was able to change it because like that was like a best decision which I could find out. From Africa perspective, I think culture was quite disciplined and quite process driven because it was more around military side and more around like a government side, right? So it was because of that kind of work environment. The culture was also in that respect only के very very disciplined, सब चीजें according to time, things were properly defined, and people were more supportive there because it was like typical military organization like we see, right? Like a pride कि they are serving the country, right? So it was something coming in that way. So culture wise, I think that like from that itself, that moment itself, I got to know कि हाँ, this is something which is beyond like your career perspective. It is something where I'm actually adding a value. जो भी मैंने सीखा है, जो भी experiences लिए हैं, it is somehow useful beyond, जैसे अपन सिक्योरिटी में देखते हैं, राइट, जैसे अपन अपनी सर्विसेज को देखते हैं, तो आई वाज कंसीडरिंग दैट, सो उस अकॉर्डिंग कल्चर वाज लाइक इंपॉर्टेंट। देन व्हेन आई मूव टू कंसल्टिंग साइड, राइट, कंसल्टिंग साइड में इट वाज अ डिफरेंट कल्चर फॉर मी, क्योंकि कंसल्टिंग में होता है कि इट्स अ मोर कस्टमर ड्रिवन, कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको अडॉप्ट करना रहता है, ट्रैवल रिलेटेड होता है कि डिफरेंट, यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट in consulting, like it's a common thing that you have to travel a lot and it will take a toll on your personal health also and personal commitments also, right? तो वो चीजें लाइक कंसल्टिंग साइड में आई फेस्ड अ लॉट। वर्किंग कल्चर में भी यही प्रॉब्लम होती है कि लाइक इट वाज अ वेरी कॉम्पिटिटिव कल्चर। कंपटीशन इज गुड, आई डोंट से कि कंपटीशन इज बैड, कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, बट अ हेल्दी कंपटीशन I think isn't required, not a toxic competition, and that's what I feel कि consulting companies are still somewhere there जहाँ पे अभी भी competition थोड़ा culture wise ऐसा रहता है कि everybody is going behind their backs and all. तो I personally didn't like much. I don't say कि मेरी टीम से भी मुझे ऐसा मिला है, like I was fortunate enough to not get that because I have always been working with a team which is from multicultural domain perspective, and mostly my teams have been outside India, so थोड़ा culture was a mixed one and it was process driven, तो थोड़ा easy रहा है। But yet again, like I have a lot of friends and they are in different domains also, so I know कि culture is a very important part and they have faced a lot of issues because of the culture. सो उसको आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा। देन प्रोडक्ट कंपनीज का जो कल्चर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, लाइक प्रोडक्ट कंपनीज में फोकस इज कम्प्लीटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग टू योर कस्टमर्स, नॉट लाइक यू आर विद कस्टमर्स बट स्टिल रिमोटली हाउ यू कैन प्रोवाइड द कस्टमर वैल्यू। तो वो एक बिल्कुल ही माइंडसेट चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पे आप कस्टमर से बात नहीं करें तो यू डोंट गेट द फीडबैक,
Customer cannot tell you whether he is happy or not happy about what you are doing, but you have to predict that whatever you are doing now, customer will be happy about it, right? तो वो mindset बिल्कुल change हो जाता है, and you are doing things according to that. You are working in, let's say, a future timeline, कि आप आज जो काम कर रहे हो वो आपको 1 साल बाद या 1.5 साल बाद पता चलेगा कि whether it is productive or not, right? How customer treated what you did, whether there was a friction or not. So वो mindset का गेम था, and I think there I like the best, and that's where I felt कि it is something which is my calling, कि product based companies में जो product पे focus रहता है, where they think of the future, and everybody working there is thinking about a particular product like their baby, and according to, like, they want to help each other. जब प्रोडक्ट बेस आप कंपनी में काम कर रहे हो एज अ प्रोडक्ट, तो आप मोर इंटरनल टीम के साथ कोऑर्डिनेट ज़्यादा करते हो, आप इंटरनली ज़्यादा मिक्सअप होते हो, और सब लोग सारी टीम्स मिलके एक प्रोडक्ट पे काम करती हैं, एज अ डेवलपर भी, सिक्योरिटी गाय भी, और डेवसेकऑप्स वाली टीम्स और जितनी भी टीम्स होती हैं एज अ एक प्रोडक्ट में काम करती हैं। एग्जैक्टली, तो वो जो कंसेप्ट होता है ना, वन टीम वाला कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होता है इन अ प्रोडक्ट, क्योंकि वो सब लोगों को पता है कि अगर कुछ भी खराब हुआ तो ये सबको सबको ही लेके डूबेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने एक स्लैक करा तो ये हो जाएगा या ये वो हुआ, सबको साथ में काम करने में दे ऑल रियलाइज कि वी आर पार्ट ऑफ वन टीम। तो वो वन टीम वाला जो फिनोमिना है वो आई थिंक इज वेरी मच पॉपुलर and very much promoted in kind of a product companies, and that's where I related it to. And I also prefer those kind of cultures जहाँ पे I think your differences are celebrated and you understand कि आपकी strength क्या है, weakness क्या है। ऐसा नहीं कि आप अपनी strength पे play कर रहे हो और weakness को आप improve नहीं कर रहे। Here you get a chance to improve your weaknesses also, which I felt कि consulting में थोड़ा ऐसा रहता है कि जो आपकी strength है आपको बस उसी पे play करना है, like you won't get a chance to play on your weaknesses। जैसे अगर मुझे कोई डोमेन नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं पेन टेस्टिंग में हूँ और मुझे फॉरेंसिक्स नहीं आती है, तो मुझे वो फॉरेंसिक प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ही नहीं। चाहे मुझे कितना ही पैशन हो या इंटरेस्ट हो, बट क्योंकि कस्टमर के पास जाना है मुझे, कस्टमर विल एक्सपेक्ट मी टू नो एवरीथिंग, राइट? तो मुझे वो कस्टमर उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करने देगा, मेरी टीम ही मुझे उस पर काम नहीं करने देगी, विच इज नॉट द केस इन प्रोडक्ट और या दूसरी कंपनी में, क्योंकि वहां पे यू हैव टाइम टू लर्न, understand, and whatever you're passionate about, you are given those opportunities. So yeah, I think that is a major difference which I found in all these three different type of companies which I've worked so far. कोई भी कंपनी किसी को भी कब और क्यों चेंज करनी चाहिए, लाइक कितने टाइम के लिए कंपनी के साथ रहना चाहिए? अगेन लाइक इसका कोई ऐसा बुलेट प्रूफ आंसर नहीं है कि ये पर्टिकुलर रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ। आई शेयर यू माय एक्सपीरियंस कि मेरा क्या होता है। मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हाउ मच आई एम लर्निंग। मेरी लर्निंग पे डिपेंड रहता है कि मेरी लर्निंग इज स्टैग्नेंट इन द करंट कंपनी, मेरी लर्निंग एंड इट ग्रोथ, या आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टिल लर्न एंड ग्रो। दैट इज द बेस्ट पैरामीटर विच आई मेजर माई सेल्फ। और ये ऐसा नहीं है कि इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द कंपनी, के कंपनी में ऐसा है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मुझे, जब मैं खेल में था, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट कंपनी, मालवेयर, डीपैप, इस सब पे रिलेटेड, राइट? आई आई न्यू कि वो लोग ब्लॉकचेन में है ही नहीं, मतलब उनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है ब्लॉकचेन में, बट आई हैड टू गेट इनटू ब्लॉकचेन। तो अगर मैं 2 साल भी रहता या 3 साल भी रहता, तो वे आई नो कि मुझे ब्लॉकचेन की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी उसमें, राइट? तो आई न्यू कि आई हैड टू चेंज इट, राइट? इसीलिए दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच आई अंडरस्टैंड, लाइक आई अंडरस्टैंड कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है मेरे करियर को लेके आगे के जो 6 साल, जो अपन गोल्स लिखते हैं ना अपने करियर में, राइट? जब भी अपन आप ज्वाइन करते हो या अपनी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, व्हेन यू सेट योर केपीआईज एंड गोल्स विद योर मैनेजर, राइट? आई टेक दोस गोल्स वेरी सीरियसली फॉर माई सेल्फ इन माई करियर ऑल्सो, एंड आई थिंक कि ये मेरे लिए मीट हो रहे नहीं हो रहा पर्सनली, नॉट कंपनी के लिए। कंपनी के लिए तो आई नो कि कंपनी विल इंश्योर कि उनके गोल्स मीट हो रहे हैं, बट मेरे पर्सनल गोल्स मीट हो रहे नहीं हो रहे। अगर मुझे लगता है कि these goals cannot be met in the current company, then definitely I look for a change. And then again, like I also look at around the culture part. अगर culture मुझे ऐसा लगा कभी भी, like अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है fortunately, but I know a lot of friends who have left their companies in just 1 month or maybe in 15 days also, because they just purely didn't like the culture. क्योंकि they have seen other cultures and they joined a particular company, and though company is very good, very named company, but the culture they didn't like, or the synchronization with the team they don't like, and they have left the companies within a month also. तो ऐसा कोई वो hard and fast play नहीं है। I think it will more depend on what kind of goals you have for your career in mind, and accordingly आपको उसको according decision लेने चाहिए। सो एज अ रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू, और आप भी हायरिंग करते हो डिफरेंट डिफरेंट लोगों की, तो आपका माइंडसेट क्या रहता है, क्या आप देखते हो उसमें, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हो और फिल्टर आउट कैसे करते हो
कोई भी कैंडिडेट कि ये बेस्ट कैंडिडेट है मेरी कंपनी के लिए? या आई थिंक अब जैसे मैंने आपको बोला, अब तो क्या है, बहुत स्ट्रीमलाइन हो चुका है हायरिंग प्रोसेस भी। और रोल जो है उनमें बाउंड्रीज क्लियरली सेट है, मतलब जो सॉक एनालिस्ट है, सिक्योरिटी एनालिस्ट है, सिक्योरिटी कंसल्टेंट है, सबके रोल्स प्योरली डिफाइंड है। एंड एवरी कंपनी और एवरी हायरिंग मैनेजर नोज के व्हाट दिस रोल हैज टू डू। द बाउंड्री इज ऑलरेडी डिफाइंड, तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर सॉक एनालिस्ट के लिए मैं अगर कोई इंटरव्यू ले रहा हूँ या मुझे सॉक का, तो I'll see के how well he knows about different threats, hunting things like कितने tools he knows, how do he knows कि threats are updated, does he knows about the ransomware and the common threats which are out there, how do he knows to detect those threats। इस तरह के जो questions होते हैं scenario based, then I create some scenario based questions around these particular topics। I personally like to judge based on like scenarios and how the person will be thinking in a particular scenario compared to like asking just a technical questions, throwing a technical diagrams and asking those questions। वो मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता, तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ थोड़ा सिचुएशन बेस्ड एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देके कैंडिडेट को कंफर्टेबल फील करके एंड अंडरस्टैंड कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। हमेशा ऐसा नहीं है इंटरव्यू में 1 घंटे में आपका जरूरी नहीं है, यू कैन हैव अ बैड डे आल्सो राइट, तो जरूरी नहीं है आपका लाइक बेस्ट से बेस्ट पर्सन का इंटरव्यू कैन बी लाइक अ वर्स्ट राइट ऑन अ बैड डे। So I try to ensure के scenario based में क्या है, there is no direct answer, there is no right answer, or to say there is always various ways how your mindset is working। So that's what I try to evaluate in my interviews whichever I take for any roles। Again, this is not for entry level role या mid senior role, छोटा रोल हो, फॉर लाइक एंट्री लेवल रोल हो या सीनियर लीडरशिप रोल हो, सब में आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट बिहाइंड द पर्सन व्हाट दे आर थिंकिंग एंड देन डीप ड्राइव लाइक आई डबल क्लिक ऑन इट टू गो इनटू टेक्निकल लेवल आल्सो। ऐसा नहीं कि बस सिनेरियो बेस्ड हो गया, बट वंस दे स्टार्ट आंसरिंग आई डू अ डबल टैप के ओके इफ यू आर थिंकिंग अबाउट डेटा सिक्योरिटी देन क्या डेटा एड्रेस, डेटा इन ट्रांजिट, डेटा इन यूज कैसे, देन व्हाट काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स विल यू बी यूजिंग। तो उसको डबल टैप करते 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 आई गेट इट टू द डीप। बट फर्स्ट जो इनिशियल वो होता है ना, एक जो इंटरव्यू फियर होता है, उसको खत्म करने के लिए आई ट्राई टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। देन जो सीवीज होता है, सीवी में आई जनरली सी के हाउ वेल दे हैव आर्टिकुलेटेड द वर्क दे हैव डन। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया हो कहीं से भी इधर उधर सीवी लगा के जैसे अपन कॉलेज में करते थे। उसकी जगह आई सी के हाउ वेल दे हैव given the things which they actually have worked, whether it is customized to their profile or their work or not। ऐसा नहीं कि वो he has been a security engineer but उसने अपने description में security consultant वाली चीजें लिख रखी है कॉपी पेस्ट करके। तो I try to see those kind of small things कि whether CV is customized or not। बहुत बार ऐसा होता है, आजकल क्या है, इतने सीवीज आते हैं, इतने प्रोसेस होते हैं, तो आजकल तो सीवीज ऑलरेडी एट अ रिक्रूटर लेवल फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो मतलब हमारे पास तो सीवी ही ऐसे आते हैं जो ऑलमोस्ट लेट्स से, अगर एचआर ने इंटरव्यू लिया, स्क्रीनिंग इंटरव्यू, एंड इफ दे लाइक इट देन ओनली वी गेट द लाइक रिज्यूमे। ऐसा नहीं है कि पहले के जैसे कि किसी ने आपको ईमेल कर दिया यू गेट द रिज्यूमे, लाइक यू दैट गेट इट जस्ट फ्रॉम अ रेफरल पर्सपेक्टिव। तो उसमें आपको सीवी इवैल्यूएट करना कम रहता है। बट I try to do is see their LinkedIn profile, see their GitHub profile कि उन्होंने कितना एक्टिवली दे आर इंगेजिंग विद द कम्युनिटी एंड हाउ दे एक्टिव दे आर। ऐसा नहीं कि बस आप काम काम करे जा रहे हो। बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में आई थिंक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बी अवेयर, लाइक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट क्या चल रहा है, क्या रैंसम चल रहे हैं, क्या अटैक्स चल रहे हैं, व्हाट इज अ प्रॉपर थ्रेट अटैक vectors which are there, so it will be very difficult for you to be prepared। so that's what I see कि how well they are prepared, उनका लर्निंग क्या रहता है, लाइक व्हाट इज द सोर्स ऑफ लर्निंग। इज इट सोशल मीडिया, इज इट समथिंग व्हिच दे स्पेंड लेट्स से ऑन अ पर्टिकुलर न्यूज़ वेबसाइट, कोई लाइक चैनल दे फॉलो ऑन लिंक्डइन। तो आई ट्राई टू इवैल्यूएट दोस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो कि उनका लर्निंग कांस्टेंट कहाँ से आ रहा है, आर दे गोइंग टू अ मीटअप टू अंडरस्टैंड डू दीस थिंग्स। तो ये सब चीजें मैं इवैल्यूएट करता हूँ टू अंडरस्टैंड अ कैंडिडेट प्रोफाइल। काफ़ी आपने ब्रीफ में बताया, ये भी बता दीजिए कि लाइक एचआर कौन सा टूल यूज़ करता है, लोगों को पता नहीं है। सो टूल्स तो यार बहुत सारे होते हैं आजकल के लिए, जैसे एटीएस करके अपन जो बोलते हैं। एटीएस इज अ वेरी फेमस टूल एंड एटीएस इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट अ टूल। एटीएस बेस्ड टूल्स बहुत सारे आते हैं आजकल, जैसे ग्रीन हाउस हो गया, नौकरी हो गया, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन जॉब से होता है। ये सारे एटीएस बेस्ड टूल्स होते हैं विच आई थिंक आजकल सारे रिक्रूटर्स यूज करते हैं। इट्स कॉमन, मतलब ऐसा कुछ नया नहीं है आजकल टूल्स में। ऑलमोस्ट इफ यू हैव अ गुड सीवी, गुड एक्सपीरियंस, देन योर सीवी विल गेट शॉर्टलिस्टेड। आई ऑलवेज सजेस्ट इफ यू आर डायरेक्टली अप्लाइंग ऑन अ कंपनी वेबसाइट देन ऑलवेज गो विद द एटीएस बेस्ड रिज्यूमे। आजकल वो डिजिटल सीवीज जो आते हैं और लाइक यू जस्ट कॉपी पेस्ट
based on your friend's CV, right? It is not a very good use case. You should work, customize your CV according to your strengths and weaknesses, and accordingly you should put the keywords which for which role you are applying. क्योंकि आजकल सारे एटीएस बेस्ड फिल्टर होते हैं, तो एटीएस में पर्टिकुलर कीवर्ड होते हैं हर रोल के लिए। जैसे अगर सिक्योरिटी कंसल्टेंट है तो सिक्योरिटी कंसल्टेंट में कंसल्टिंग, कस्टमर क्लाइंट ऑब्सेशन, क्लाइंट कस्टमर रिलेशनशिप, दो काइंड ऑफ कीवर्ड्स वुड बी देयर। आपके सीवी में अगर वो गायब है तो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होने की चांसेस कम हो जाएंगे। सो दोस काइंड ऑफ keywords are very important in case of ATS based tools. Again, ATS वाले जो tools हैं हर कंपनी का अलग अलग होता है। मतलब इट्स नॉट अ कॉमन थिंग कि इस कंपनी में ये है, इस कंपनी में ये है, इस कंपनी में ये है, कहीं वर्क डे हो रहा है, कहीं ग्रीन हाउस हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। एवरीबॉडी विल हैव अ डिफरेंट थिंग। व्हाट यू कैन फोकस इज, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये कंपनी कौन सा टूल यूज कर रही है, you focus on making sure that your CV can actually be customized for all the tools. And the best way is to create your CV in a ATS based kind of a CV template, which is very much available, like internet पे available है अपने पास। सो एज अ मैनेजर आप सीनियर लेवल पे काम कर रहे हो, तो अपनी टीम को कैसे आप कंफर्टेबल फील कराते हो या कैसे आप वर्क करते हो उनके साथ? और कोई भी नया बंदा आता है, कैसे आप उसको एकोमोडेट करते हो? या लर्निंग एज अ इंटरव्यू में तो आप नहीं पहचान सकते कि वो कितना अच्छा है या कितना नहीं, इन कंपनी में आने के बाद आप उसको जज करते हो, तो कैसे आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हो? एक बार ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दीजिए। अच्छा, तो हम लोग जो करते हैं बेसिकली, पहला चीज रहता है कि हम लोगों का एक बहुत ही ऑनबोर्डिंग मटेरियल्स है, विच इज आई फील इज अ वेरी बेस्ट वे फॉर अ न्यू कमर टू स्टार्ट। तो जैसे मैंने भी बहुत बार कंपनीज पे जब नया स्टार्ट किया है, तो द फर्स्ट प्रॉब्लम विच आई ऑलवेज फेस इज द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कि कहाँ से स्टार्ट करो, राइट? तो उसके लिए क्या है, एक ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके टीम मेंबर्स के लिए। तो हम लोगों ने एक ऑनबोर्डिंग टीम, लाइक ऑनबोर्डिंग काइंड ऑफ टेम्पलेट बना रखा है, जिसमें कि कौन से आपको चैनल ज्वाइन करने हैं स्लैक पे, या कौन से टीम मेंबर से आपको बात करनी है, आपको क्या पढ़ना है, किस टूल्स का एक्सेस चाहिए, आपको ये पर्टिकुलर वीडियोस शुरू में देखने हैं आपके, अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल लर्निंग्स जो आपको एक एचआर की तरफ से लर्निंग कोर्सेज आते हैं, राइट? उसके अलावा जो आपको टीम बेस्ड जो पर्टिकुलर वीडियोस हैं या कोई मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स हैं जो आपके लिए यूजफुल रहेंगी, वो हम लोगों ने एक पहले से ही रेपोजिटरी बना के रखते हैं जो, और हम उसमें टाइमलाइन दे देते हैं कि आपको फर्स्ट वीक में ये करना है, सेकंड वीक में ये करना है, थर्ड वीक में ये करना है, फोर्थ वीक। तो आफ्टर 1 month वी नो के व्हाट वी एक्सपेक्ट देम टू नो, बेयर मिनिमम ना, कि एक्सेस आपके पास ये सारे एक्सेस होने चाहिए, गिटहब के, क्लाउड के, इस टूल के, उस टूल के। आपको ये सब पता होना चाहिए कंपनी के बारे में कि ये कौन मैनेज करता है, ये कौन मैनेज करता है। तो वो बेसिक चीज आपको एक महीने में उसको पता चल जाएगी, सारी की सारी चीजें। सेल्फ स्टडी, मतलब ऐसा इसमें हमारा भी कोई एफर्ट नहीं जा रहा, ना उसका एफर्ट जा रहा है, एंड ही आल्सो डोंट फील दैट अनकंफर्टेबल टू कीप आस्किंग दोस क्वेश्चन, क्योंकि उसके पास एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में सारे लिंक्स है, सब चीजें हैं कि व्हाट ही हैज टू डू। आफ्टर 1 month when we interact with him, ना, it's completely different. He does not feel that way कि मुझे क्या करना है या कैसे करना है। And then based on his job, the role which is hired for, we already have defined his first month से लेके 6 month का targets के what he has to do, like what goals he has to do. We define it with him from first month से लेके 6 month तक, so he knows कि what he has to achieve, what kind of things he has to do. And nowadays सारी की सारी टीमें स्क्रम फॉलो करती है, लाइक वी ऑल फॉलो स्क्रम्स, राइट? स्टैंड अप्स होते हैं, तो हर मंथ का जो स्क्रम्स होता है उसमें भी डिफाइन कि व्हाट वर्क वी विल बी डूइंग, हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड, एंड बाय द एंड ऑफ द स्क्रम वी ऑल नो कि ये सारा, लाइक एक्सपेक्टेशन इज क्लियरली डिफाइंड कि ये जो अपन ने टास्क लिया है स्क्रम में, वी हैव टू फिनिश इट राइट इन दिस मंथ। तो एनी हाउ दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आपने आज एक दिन में 8 घंटे दिए या 10 घंटे दिए या 4 घंटे दिए या 2 घंटे दिए। अगर आपने अपना काम फिनिश कर लिया एक मंथ में, दैट इज गुड फॉर एवरीवन, क्योंकि दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपको आज 12 घंटे देने थे या 15 घंटे देने थे। मेन थिंग इज कि यू हैव फिनिश द टास्क ऑफ दिस सिस्टम। दैट्स हाउ वी डिफाइन। तो हम जनरली जो भी न्यू कमर्स आते हैं उनको इसी तरह से ग्रूम करते हैं, उनके लिए एक पार्ट डिफाइन करके, ऑन बोर्डिंग मटेरियल डिफाइन करके इंश्योर करते हैं कि दे आर कंफर्टेबल विद दिस होल प्रोसेस, क्योंकि उनके लिए भी नया है, मतलब वी अंडरस्टैंड दैट। सो आपने एआई में अभी आप शिफ्ट कर रहे हैं या काम भी कर रहे हैं, तो एआई कैसे शेप कर रहा है साइबर सिक्योरिटी डोमेन को? इसको थोड़ा ब्रीफ या आप एज अ न्यू कमर्स के लिए आप बताएं। Sure. So AI is something like हर डोमेन में, नॉट जस्ट साइबर सिक्योरिटी, बट जिस भी डोमेन है, सब डोमेन में इट इज प्लेइंग अ वेरी की रोल, एंड इट इज ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब 5% चेंज आ रहा है या 3% चेंज आ रहा है। कंपनीज हैव स्विच्ड कंप्लीटली, लाइक ऑलमोस्ट 100%, 80% ऑफ द ऑपरेशंस टू एआई। ऐसी भी कंपनीज है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सारी कंपनी शिफ्ट हो गई है, बट
it is bringing a transformative challenges when it comes to productivity, right? For me personally, I don't know how many AI tools I'm using now, and it is becoming very important for me. मेरे daily काम के लिए it is becoming very very useful. So I personally love AI. सिक्योरिटी में AI is very important in various domains, जैसे कि अपन आइडेंटिटी एंड एक्सेस से स्टार्ट करते हैं, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, एक्सेस रिव्यूज जो हम करते हैं, क्वार्टरली एक्सेस रिव्यू करना है, मंथली एक्सेस रिव्यू करना है, सो फार इट इज अ मैनुअल जॉब, राइट? इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। छोटी कंपनी में भी 500 लोगों के एक्सेस रिव्यू करने में भी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? क्योंकि उनके पास इतनी एप्लीकेशन है, 100 एप्लीकेशन के एक्सेस रिव्यू करने हैं आपको क्वार्टरली। जस्ट इमेजिन कितना टाइम जाएगा, राइट? तो वो प्रैक्टिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम एट अ ह्यूमन लेवल, बट इफ यू इंक्लूड एआई सच दिस इन दिस केसेस, this can pretty much happen every day. Every day within few minutes you'll get a report of the access, and it will happen much more efficient because human errors are reduced. I'm not saying कि बिल्कुल पूरा 100% हो जाएगा, but still the efficiency will be improving, and AI is still a work in progress. It is not that कि सब कुछ हो गया final, it is not getting developed. It is getting rebuilt and rebuilt. It is getting innovative every day. So the efficiency will keep increasing. So I feel identity and access management same like, let's say, जो अपन लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग करते हैं, तो लॉग्स को जो एनालाइज करते हैं, इतनी जो टेराबाइट्स ऑफ लॉग्स व्हिच वी आर कलेक्टिंग, you cannot imagine a human, or let's say just a normal tool to just analyze these. Using this artificial intelligence, and maybe in future we are developing such small kind of models which will be trained on such data, it will be able to identify specific problem for that data set. तो वो जो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो अपन एज अ जर्नलिस्ट अपन नहीं सोच पाते एज अ ह्यूमन, लाइक your way of thinking cybersecurity will be completely different than me, right? But in case of AI, it will have a thought process of everyone because it is being trained with इतना बड़ा डेटा सेट से कि उसको पता है कि आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ, और हमारे जैसे 50 लोग और क्या सोच रहे हैं। तो इट विल बी एबल टू टेक अ कंक्लूसिव डिसीजन ऑफ द डेटा बेस्ड ऑन ऑल ऑफ अस थिंकिंग कंबाइंड, एंड द डिसीजन विच इट विल प्रोड्यूस विल बी मोर इफेक्टिव। तो जब एफिशिएंसी बढ़ जाती है एंड time is reduced to take these decisions, that's what we look in cybersecurity, because आपको पता है cybersecurity में time is the key, like every anything can happen within minutes, right? तो हम लोग जो time है, time to reduce the identifications of these risks is pretty much improved from usage of AI. So that's what I feel कि AI will bring this change in cybersecurity. आपने कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज और टॉक दी हैं और कितना इम्पोर्टेंट होता है इन चीज़ों पे पार्ट लेना? आई हैव लाइक मुझे तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं टॉक देते देते। मैं जब कॉलेज से स्टार्ट किया था, तभी कॉलेज में मैंने खुद ने अपना एक क्लब स्टार्ट किया था, टेक्नोक्रेट क्लब करके। वहीं से मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट किया था और ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस से, इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, लोकल मीटअप्स जो सिटी वाले मीटअप्स होते हैं उससे मतलब उसमें पार्टिसिपेट करा था। तो जैसे नल करके एक फेमस लोकल चैप्टर्स चलते थे अपने पहले, नल हमला सेशंस चलते थे, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। उसमें आई गेव अ लॉट ऑफ सेशंस। ओएस के लोकल चैप्टर्स पे मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया है, एंड आई हैव गिवन द सेशंस थ्रू आउट द डिफरेंट कंट्रीज, नॉट जस्ट इंडिया, पर बाहर भी मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बिसाइड्स के जो चैप्टर्स हैं, कनाडा के, सिंगापुर के, थाईलैंड के, जर्मनी के, जहाँ भी कंट्रीज में मैं रहा हूँ, सब जगह मैंने पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पे मैंने सेशंस दिए हैं। आई पार्टिसिपेट इन ककून, नलकॉन, I have given lectures at various international conferences like Texas Cyber Summit, वहां पे भी मैंने कॉन्फ्रेंसेस में दिया है। थाईलैंड का एक द हैकर समिट होता है, वहां पे दिया है। सिंगापुर में दिया है, जहाँ पे अलीबाबा के, AWS के देयर वाज कॉन्फ्रेंसेस व्हिच आई पार्टिसिपेटेड एंड गिव लेक्चर्स ऑन। सो बहुत सारे मतलब माय पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस बीन हाई, like I've been doing it because I like to share my knowledge, and I want people to know, understand about this domain a lot, and I'm very passionate about it. So I have spoken in various national, international conferences, and recently I started my own community called Future GPT. तो ये बैंगलोर में हमने स्टार्ट किया है। We have been almost 1 year, और वहाँ पे भी हम लोग हर month we are doing in-person events on various emerging technologies, AI, cybersecurity, IoT इसमें। And वहाँ पे भी I have done a lot of like I do all the panel discussion with the experts on various topics around that particular theme of the month. तो जैसे आपने कॉलेज में रिसर्च वर्क पे काफ़ी काम किया, आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया,
तो एक बार ये बता सकें कि लाइक रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं और कैसे टॉपिक चूज करें और कैसे पब्लिश किया जाता है, उसका एक होल प्रोसेस। सो रिसर्च पेपर आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन आप पब्लिश कहाँ करना चाह रहे हैं, पहले ही बात तो, क्योंकि बेस्ड ऑन योर पब्लिकेशन इट विल डिपेंड ऑन कि फॉर्मेट क्या रहेगा। हर पब्लिकेशंस का अलग अलग फॉर्मेट रहता है, जैसे IEEE का सब अलग रहता है। देन अगर आप पेटेंट के लिए फाइल कर रहे हो तो अलग रहता है, और अगर आप कोई पर्टिकुलर लेट्स से जर्नल में पब्लिश करना चाह रहे हो तो हर जर्नल का भी अलग अलग रहता है। बट फार एंड लार्ज कुछ चीजें कॉमन रहती है। फॉर एग्जाम्पल इट स्टार्ट विद यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आपको टाइटल जो है रिसर्च पेपर का क्या है, लाइक व्हाट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। योर टाइटल शुड बी वेरी क्लियर। बाय रीडिंग द टाइटल समबडी विल नो कि आपने इस पेपर में बात क्या करी है। इट शुड नॉट बी बिल्कुल कंफ्यूजिंग, और जैसे अपन वो होता है कि बिल्कुल कोई फनी सा या ह्यूमरस काइंड ऑफ टाइटल है, वैसा नहीं चलता। इट्स सिंस इट्स अ रिसर्च वर्क, इट शुड बी मोर प्रोफेशनल। इट शुड बी समथिंग which generate curiosity between anyone who reads this particular thing, right? तो एक तो टाइटल इज इम्पोर्टेंट, देन द ऑथर्स हैज टू बी डिफाइंड कि आपने किस किसने इस पे काम किया है। आफ्टर द टाइटल ऑथर हैज टू बी मेंशन्ड इन दैट रिसर्च पेपर कि किसने इस पे काम किया है। देन द नेक्स्ट सेक्शन कम्स इज द एब्स्ट्रैक्ट। So there is a one paragraph which you have to write. Generally, it is 150 to 200 words which is given for the abstract. And again, it will be different based on किस जर्नल पे और कहाँ पे आप पब्लिश कर रहे हो। तो उसमें आपको बिल्कुल समराइज करके एक पैराग्राफ में बताना पड़ता है कि आपने ये पेपर किस लिए लिखा है, मतलब क्या है इसका लिखने का पर्पस, आपने क्या डिस्कस किया है इसमें। तो इट जस्ट लाइक अ वेरी स्मॉल समरी ऑफ द होल रिसर्च पेपर जो आपने पब्लिश किया है, कि ये क्या है, सो दैट पीपल कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट दे विल बी अबाउट टू सी इन दिस होल पेपर। Then the sections will start and it will depend on again the प्लेस वेयर यू आर पब्लिशिंग द पेपर। जैसे IEEE है तो जनरली उनकी पेपर लेंथ होती है 4 पेपर मिनिमम होता है, 4 लेंथ का पेपर। एंड देन मैक्सिमम लेंथ कुड बी एनीथिंग। ओके। जर्नल्स होते हैं, कुछ जर्नल्स पब्लिशिंग लाइक फेमस जर्नल्स होते हैं हांगकांग के और बाकी लोगों के, वहां पे द क्राइटेरिया फॉर द पब्लिशिंग पेपर इज लेट्स से 12 पेपर का मिनिमम लेंथ होना चाहिए। एंड देन दे ऑल्सो नीड सम proof of concepts also, POCs, like practical POCs, that whatever you're talking about in the paper is actually true. You have tested it out. It's not just theoretical, but you have to give some proofs around it. So that also you have to attach apart from your paper. जो पेपर होता है, पेपर के अलग अलग सेक्शन होते हैं। नाउ सेक्शन इज समथिंग विच ऑथर्स कैन डिसाइड। ऐसा नहीं होता कि 4 सेक्शन होने चाहिए, 3 सेक्शन होने चाहिए, 2 सेक्शन होते हैं। दैट इज समथिंग विच इज कम्प्लीटली लेफ्ट ऑन ऑथर्स, how they want to categorize their call like their paper into how many categories. Idea is you have to maintain the length of the paper. It cannot be कि दो पेजेस में आपने रिसर्च पेपर खत्म कर दिया। So it has to follow the guidelines which is given completely from the publication. After that section is done, and let's say if you have included the POCs and whatever your observations are, you have to like use the data in that. So research papers are important because we are giving the data. It is not just, it's not a novel like a fiction novel that you are just thinking about technology and writing something about your understanding, but it is more a data driven kind of a thing. So you have to ensure that you are putting the data about what you are researching or whatever you have researched on, that is has to be placed with the proper evidences. And that has to be shared in the paper as well with the links. You can have like a links, let's say अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई और वहां पे आपने डेटा शेयर कर रखा है, तो you can put that in the references sections inside your paper, and you can put those kind of bookmark those things inside your paper. All those things you have to know. And then last में एक आता है conclusion chapter, conclusion वाला। Again, like as the name suggests, it is just concluding all your observations कि आपने क्या, जो आपने initially start किया था, जो आपका theory था, are you able to prove it or not, whether this research paper has justified this theory or not. That decision will be told in the conclusion. And then last part would be the references and maybe the bookmarks, कि आपने अगर कहीं से references दिए हैं इस particular research paper को लिखने के लिए, then you are giving a credits and references of all those places, newspaper or books or anything inside that particular paper, that has to be there. So all these things will be part of the research paper, and then you have to submit it. They will review it, peer review it, and then once if it is reviewed and accepted, then it will be published in your that books or any journals which you have published. सो एनी अपने कोई हाइट प्रायोरिटी इंसिडेंट कभी टैकल किया हो, एक बार उसको बताएं कैसे आपने टैकल किया, कैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट टीम के साथ कोऑर्डिनेट किया। Sure. So I think a high priority incidents बहुत बार आए हैं, मतलब I've been into the journey so far. So multiple times it has come.
The best way to tackle high priority incident is to have like an incident response plan in place, and that I learned hard way. जब हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट किया था, मैंने फर्स्ट जॉब और सेकंड जॉब में, तब इंसिडेंट रिस्पांस नाम से कुछ चीज ही नहीं होती थी, मतलब देयर वाज नो इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, या ये डोमेन ही नहीं थी इंसिडेंट रिस्पांस की. बट थैंकफुली नाउ इंसिडेंट रिस्पांस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल द कंपनीज. एंड इन द इंसिडेंट रिस्पांस यू डिफाइन कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो हाउ यू विल prioritize the incident, what are the action items you will do, who all will be the stakeholders जिनसे आपको बात करनी है, कैसे आप डिसाइड करोगे कि क्या बैकअप लेना है या किस चीज को आपको अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है. तो ये सब चीजें प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होती है, एंड दिस इज अ कॉमन थिंग नाउ फॉर एवरी कंपनी. एवरीबडी विल हैव इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, दिस इज अ मैंडेटरी थिंग. और उसमें आपको प्रॉपरली डिफाइन रहेगा कि आपको कैसे करना है. तो मैंने जो उसे इंसिडेंट्स करे थे उसमें आपको, जैसे एक बार हमारे को डीडोस अटैक्स हो रहे थे कंपनी की वेबसाइट्स पे, तो हम लोगों को इंश्योर करना था कि वो जो अटैक्स हो रहे हैं वो कस्टमर्स, जो नॉर्मल कस्टमर्स थे, उनके एक्सेसिबिलिटी को अफेक्ट कर रहे थे. लाइक जो एक्चुअल रियल कस्टमर्स है, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस द वेबसाइट. सो वी हैव टू इंश्योर दैट वी फिल्टर आउट दोस अटैक्स, वी ब्लॉक दोस अटैक्स विच आर कमिंग. तो उसके लिए हम लोगों ने आइडेंटिफाई करा कि ये आईपी कहाँ से आ रहे हैं, कौन से एड्रेसेस से वो आ रहे हैं अटैक्स, एंड हम लोग उनको ब्लॉक करा, फिल्टर आउट करा. जो वीपीएन यूज करते थे उन वीपीएन को ब्लॉक करा. इस तरह के जो इंसिडेंट्स थे हम लोगों ने उसको टैकल किया. एक बार हुआ था जब वी वर टारगेटेड फॉर द फिशिंग स्कैम्स इन द ऑफिस, जहाँ पे किसी लाइक लोगों ने जो अटैकर्स थे, दे गॉट टू नो अबाउट आवर पब्लिक डोमेन कि हमारा ईमेल एड्रेस कैसे फॉर्म करना है. देन वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज करके दे स्टार्टेड सेंडिंग फिशिंग ईमेल्स टू ऑल द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड सेल्स पीपल इन ऑर्डर टू गेट द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूजर नेम पासवर्ड आउट ऑफ देम. तो फिर हम लोगों को जब दो तीन इंसिडेंट रिस्पॉन्ड, लाइक हम लोगों को पता चला कि इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो वी first did like a awareness session for the all the employees, giving them an idea कि इस तरह के attacks हो रहे हैं, you have to be careful about sharing any information. And then we also did an additional technical control, जहाँ पे हम लोगों ने जो हमारे email security है, जो DLPs हैं, उसको थोड़ा strong करा. उसमें हमने filter out करा कि कौन हमें mail कर सकता है, what kind of action has to be performed. थोड़ा उसमें DLP वगैरह के additional rules लगाना. Those are the additional steps which we took in order to ensure कि these instructions, these kind of incidents are reduced. तो मल्टीपल इंसिडेंट्स इस तरह के होते रहते हैं साइबर सिक्योरिटी में. इट्स नॉट अ न्यू, बट हैविंग अ इंसिडेंट रिस्पांस प्लान इज समथिंग व्हिच इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड, क्योंकि वो उसमें एक प्रॉपर प्रोसेस डिफाइन रहता है कि आपको किससे बात करनी है, क्या एक्शंस लेने हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइनली क्रिएट अ रिपोर्ट आल्सो ऑफ द इंसिडेंट कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपने कैसे इसको ठीक किया, एंड फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो व्हाट यू हैव टू डू. तो दैट इज लाइक अ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड थिंग. आप कौन कौन से रिसोर्स फॉलो करते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए और अपडेट रहने के लिए? मैं जनरली जो करता हूँ निदेश, मेरा लाइक लिंक्डइन प्रेजेंस अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ. एंड क्योंकि मैं इस कम्युनिटी में लाइक ज्वाइन पहले से ही करा था, तो आई नो ऑल द फोक्स हु आर प्रीटी एक्टिव इन दिस कम्युनिटी. तो मेरा जनरली सोर्स रहता है लिंक्डइन पे लोगों को, जो मैं पर्टिकुलर लोग होते हैं जो पर्टिकुलर डोमेन में होते हैं, उनके वर्क को मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ कि व्हाट दे आर रिसर्चिंग ऑन. एंड बेस्ड ऑन दैट आई डायरेक्टली आस्क देम द क्वेश्चंस, क्योंकि आई एम कनेक्टेड विद देम वन ऑन वन इतने सालों से, लाइक वी आर फ्रेंड्स, राइट? So it's easier for me to connect them on WhatsApp and just ask any questions which I have, or maybe I need more details. Or else I go to like GitHub. GitHub is my favorite source, क्योंकि GitHub पे सारे researchers जो भी हैं पूरे globe के, they are available, their work is available. So I try to go on GitHub and I identify कि नए projects क्या चल रहे हैं, how people are using it, and based on the usage frequency I get to know कि ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्टिव है या नहीं है, मतलब पॉपुलर है या नहीं है. ऐसा नहीं कि गिमिक की प्रोडक्ट है. So I get to know those kind of things from there, and then I follow this news very frequently कि क्या news चल रही है उसको. I try to go through and be very active. I spend like half an hour every day on different news channels and see कि क्या activity चल रही है, क्या नहीं. It may not be necessarily around cyber security, but anything which is around technology, because at the end of the day everything will come back to cyber security. जो भी technology में हो रहा है, तो I try to be more active in that domain. कैसे रेज्यूमे बनाएं और रेज्यूमे में क्या क्या शोकेस करें लाइक प्रोजेक्ट, और क्या सर्टिफिकेशन से रेज्यूमे फ़िल्टर आउट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है? सर्टिफिकेशन लोगों को एडवांटेज देता है, एज आप मैनेजर भी हैं, तो किसी ने सर्टिफिकेशन किया है किसी ने नहीं किया है, तो आप कैसे उसको भी देखते हैं? तो एक रेज्यूमे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कोई रेज्यूमे बनाए उसको एक बताएं. सो आई थिंक रिज्यूमे और सर्टिफिकेट बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, एंड आई आई हैड अ लॉट लॉन्ग डिबेट्स विद एवरीवन ऑन इट. आई पर्सनली हैव हैड अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स, एंड इफ यू लुक एट माय सर्टिफिकेट करंटली, मेरे पास एक भी सर्टिफिकेट एक्टिव नहीं है.
मतलब एक दो सर्टिफिकेट एक्टिव है जो लाइफ टाइम के लिए हैं, जैसे ओएसीपी वाले जो हो गए वो तो लाइफ टाइम एक्टिव है। बट जो दूसरे सर्टिफिकेट्स हैं कोई भी एक्टिव नहीं है, मतलब आई हैव डन इट एंड दैट्स गॉन। तो मेरे लिए सर्टिफिकेट का क्या इंपॉर्टेंस था, आई ऑलवेज फील कि जब आप शुरू में करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो इन ऑर्डर टू शो दैट यू आर सीरियस अबाउट दिस टेक्नोलॉजी एंड दैट यू नो अबाउट इट, सर्टिफिकेट्स कैन बी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मेरे पास दो सीवी आते हैं जहाँ पे एक में सर्टिफिकेट मेंशन है और एक में नहीं है, तो chances are higher that I'll be more inclined toward a person who has the certificate, क्योंकि I will know कि he is pretty much more serious about it. But ऐसा नहीं है कि he will have more skills. I'm not saying that. But just as a screening level, if I am not spoken with you, right? I'm just seeing filtering it based on the CV, then I may take that decision. Just on a filtering level, I'm saying. Okay, I'm not saying it, the folk would be much better, but that may happen. Okay, but nowadays I think all the managers becoming smart, they know कि certificate is not that important, और उसी के लिए जो interview process है which is streamlined further, जहाँ पे आपको like एक तीन चार राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के, जिसमें पहला सीटीएफ हुआ, देन टेक्निकल राउंड्स हुए, सिनेरियो बेस्ड राउंड्स हुए, to ensure कि whatever you are doing, whatever you're writing in CVs are actually, yeah, you have that experience of doing those things. That is something which is taken care for sure. सर्टिफिकेट से क्या होता है, सर्टिफिकेट इफ यू आर डूइंग इट इन द राइट वे, देयर आर टू वेज टू गेट इट सर्टिफिकेट। वन इज जस्ट टू गेट द सर्टिफिकेट बट यू डोंट नो द बेसिक्स, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट करना था इसलिए आपने सर्टिफिकेट कर लिया। दैट्स व्हाट हैपेंस मोस्टली, जो सीएज कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, दे जस्ट वांट टू गेट इन सर्टिफिकेट थिंकिंग कि सर्टिफिकेट कर लिया तो हमारे को जॉब मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अब आजकल वो माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया है कि सर्टिफिकेट से जॉब मिलती है। अब माइंडसेट आता है कि आप कितना प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो आई ऑलवेज से टू एवरीवन, मेरे भी जो मेंटीज हैं, मैं सबको यही प्रेफर करता हूँ, यही बोलता हूँ कि यू शुड फोकस ऑन गेनिंग द स्किल्स। स्किल इज always higher than the certificate. If you have the right skills, you can beat the person who has endless certificate anytime, for sure. I have personally seen it, and I know a lot of folks who have zero certificate and they are pretty much up in their game when it comes to security. So security is not about certificate. That is very much clear to me at this point now, and a lot of managers know this point. But yet again, if you are trying something new, let's say अभी जब मैंने क्लाउड करा था, क्लाउड मेरे लिए नया था, तो in order to learn it and to prove it that I know it, I did a cloud certificate. So that helped me to gain the confidence of the recruiter as well as my confidence to appear for the interview, because I know कि मैंने ये पढ़ा है, करा है, and I have something to prove. अगर मैंने इस पे काम भी नहीं करा तो मैंने सर्टिफिकेट के बेस पे बोला है कि मैंने ये सर्टिफिकेट करा है, दैट मींस आई कैन लर्न एंड आई नो फ्यू थिंग्स अबाउट इट, मे आई मे नॉट हैव वर्कड ऑन इट। तो उस पर्सपेक्टिव से, उस जर्नी के लिए मेरे लिए सर्टिफिकेट वाज इंपॉर्टेंट, बट नाउ एट दिस पॉइंट आई फील सर्टिफिकेट इज समथिंग व्हिच वाज इंपॉर्टेंट फॉर माय जर्नी, बट नॉट कि मैं उसको मेंटेन करता था। क्योंकि अभी मेरे पास सर्टिफिकेट अगर एक्टिव नहीं है तो मैं जाके पहले सीएच करूँ या कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट करूँ टू इंश्योर कि मेरी जॉब कंटिन्यू रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, फॉर श्योर नहीं। सो आप बता सकते हैं कि कितने डिफरेंट तरीके के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब पोर्टल्स होते हैं सिक्योरिटी स्पेसिफिक? सिक्योरिटी स्पेसिफिक तो यार ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता मेरे ख्याल से कि आपको अलग अलग कहीं रोल मिले। जैसे नल की जरूर, डेफिनेटली देयर इज अ वेबसाइट नल, नल हमला, वेयर यू कैन फाइंड सिक्योरिटी स्पेसिफिक रोल्स, बट आई थिंक द बेस्ट प्लेसेस टू फाइंड सिक्योरिटी रिलेटेड रोल्स इज लाइक एनी अदर वेबसाइट्स, जैसे नौकरी पे एंड लिंक्डइन पे, इंडीड पे, these popular job search websites, they all have good opportunities related to cybersecurity and open roles. I think LinkedIn is being used very actively जहाँ पे लोग यूज करते हैं। उसके अलावा you can find on Insta Hire also couple of roles are there which are on cybersecurity which you can refer. But ऐसा cybersecurity specific तो like ऐसा कोई particularly very popular नहीं है जनरली के aggregators हैं which generally takes these posting from LinkedIn and Indeed, Naukri only and just put it on their website, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। सो आप बता सकें कि लाइक एज अ बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छी रहेंगी, सर्विस बेस्ड अच्छी रहेंगी, और या स्टार्टअप सही रहेगा? आपने हर जगह काम किया है तो हर कंपनी, स्टाइल ऑफ कंपनी का क्या माइंडसेट रहता है, कैसे काम करते हैं वहाँ पे लोग? It will be something which will again be my suggestion, ऐसा नहीं है कि it will be completely applicable to everyone। जो मैंने सीखा उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो I think it would be good to start your journey maybe with a consulting kind of a company, a service based company, because there you get to understand the quality। वहाँ पे quality of work पे बहुत focus होता है, because वहाँ पे customer is important and customer के according you have to be in that pressure game where you have to be always on your toe and you have to constantly learn, because you have to be in a
कस्टमर प्लेस और इन कस्टमर लाइक अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एज अ न्यू बी व्हेन यू आर इन दैट काइंड ऑफ अ प्रेशर जोन सिनेरियो, तो आपके पास दो ही चीज होती है, इधर यू विल बी गेटिंग गुड एट इट और इधर यू विल बी गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एट इट. What we have learned as an Indians are that we get good at it when we have some heat, right? So I feel like consulting has given me that opportunity to come out, strive in my career because of that kind of a pressure scenarios which have been there. After consulting, I think the good time is to get into product companies, because then you will get to understand the real reason why you are working in this particular domain, and how customers will understand your product when you are not directly interacting with them. That how that stickiness of your product can actually enhance the customer adoption, customer satisfaction when it comes to your product. So that will be there in a product company. There you will feel an actual difference, that it's not about the pressure which is put onto you, but it is about your particular passion or interest areas which will define you. So you can spend time to ensure that your areas are strengthened, and you can actually focus or identify that this is your core domain. This is where you want to focus in your career perspective, because cybersecurity is a big umbrella. It is not that you can do everything in cybersecurity. It's now divided so brilliantly and beautifully in different umbrellas that you have to pick a domain, that I want to be in application, or I want to be into network, or I want to be in SOC. So you have to pick that key, right? So product will give you that opportunity to identify your passion, identify what is your calling. And then once you have identified the calling, once you have spent time to be into that customer scenario, then startups will make much sense, because there you will be in a all out mode where you can put your learnings experience together to ensure that your company is growing from it. A startup is not there that you come in as a fresher and you start shooting in all the directions. It's not the startup. Startups need a strategical thinking in a one direction, because you have to ensure that your company is going from zero to one, not one to zero. So that is only be done when you are very clear about your thoughts and what you want to do or how you want to envision the security of your company, right? So for that, a little experience is needed. If you are working new, like I'm saying all this for a newcomers, not for an experienced one. If you have an experience, then it's on to you, like what's your calling and what your experience. But for a newbie, it may be a bit difficult to understand. They would need a mentor or a guide in a startup or these environment in order to give them a direction or steer them away. ओके सो एज अ बिगिनर सिक्योरिटी डोमेन में आने के लिए एज अ फ्रेशर दूसरे डोमेन में काम कर रहा है उसको सिक्योरिटी मान, तो क्या बेसिक चीज़ें उसको आनी चाहिए? श्योर, आई थिंक बेसिक चीजों में तो सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए कि सिक्योरिटी क्या है, लाइक व्हाट इज सिक्योरिटी। जो बेसिक सीआईए ट्रायड होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी का, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट इज लाइक अ फर्स्ट प्रिंसिपल इन सिक्योरिटी। यू शुड अंडरस्टैंड कि क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाई दैट इज required in your product or in your environment which you are working. Then other things which are required is the different understanding of the different domains के, जैसे आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है तो वहां पे क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या होता है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी में क्या होता है, आइडेंट जो अपना लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग है उसमें कौन से टूल्स यूज होते हैं, क्या होता है। तो क्या होता है एंड कैसे होता है, लाइक बोथ ऑफ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। तो यू फर्स्ट नीड टू नो कि व्हाट हैपेंस इन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, फिर कैसे होता है, कौन से टूल्स यूज होते हैं इस चीज के लिए। तो ये दो चीजें अगर आपको पता है तो आई थिंक इट विल बी इजियर फॉर यू टू गेट इनटू दैट। देन वो जो प्रोसेस है जहाँ पे यू गेट टू लर्न हाउ टू यूज दीज थिंग्स, वो वाला जो प्रोसेस है वो ऑन द जॉब भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो डिफिकल्ट रहेगा, बट यू शुड एटलीस्ट नो के क्या चीज यूज करनी है और क्यों यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, धीरे धीरे आ जाएगा वो टाइम के साथ। सो वन लास्ट क्वेश्चन कि आप एक रोड मैप दे सकें एआई सिक्योरिटी के लिए, जो जिसको भी इस डोमेन में आना है एआई सिक्योरिटी, आप एक रोड मैप दे सकें कि ये बेसिक चीज़ें पहले बिगनर लेवल पे करो, देन इंटरमीडिएट, और ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। Sure. So I think as a beginner, I always suggest that you should know the technology first. जैसे AI में अगर आपको AI सिक्योरिटी पे फोकस करना है तो फर्स्ट यू शुड नो द AI कि AI क्या है, व्हाट आर डिफरेंट एप्लीकेशंस, मशीन लर्निंग क्या है, व्हाई मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इज डिफरेंट इन AI। ये सब चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो एक बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ AI इज रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद ही आप सिक्योरिटी उसके बारे उसको समझ पाओगे, उसको कर पाओगे, जब आपको पता है कि ये काम कैसे कर रही है, राइट? सो दैट इज फर्स्ट सजेशन, दैट यू गो विद द
फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूडेमी पे अवेलेबल है, इतने ऑनलाइन कोर्सेज है जहाँ पे यू विल गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो आई हाईली सजेस्ट दैट यू शुड do that. Then comes to security part. Security के लिए I think process is much easier now because OWASP have already given a guidelines on LLM security and AI security also. So OWASP like any other domains जैसे अपने वेब के लिए होता है, मोबाइल के लिए होता है, नेटवर्क के लिए होता है, OWASP ने AI और LLM के लिए भी अपनी गाइडलाइंस टॉप 10 vulnerabilities निकाली है. So that you can go and read it out. You will get an understanding that these are the top 10 most important things which are important when it comes to AI security. So you have a roadmap कि मुझे ये 10 चीजें तो पढ़नी है. Now those 10 things are also listed on Bug Suite, जो पोर्ट सुगर की वेबसाइट्स हैं and other websites. People have created tools out of it. I told you that GitHub is something which I personally refer, and there are a lot of interesting projects around it. Medium पे a lot of articles are there, so you can go through that those articles in order to know about these attacks. तो जैसे prompt injections का attacks हो गए कि how the prompt injections happens, why it is important in case of LLMs, right? How the evasion attacks happens. So these kind of attacks you should know about these attacks. Then you have to practice these attacks. So there are a lot of labs which are available online which you can use in order to simulate the environment of the AI or LLMs and then practice these further. तो जैसे अपने हैकर वंस के और इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, राइट? सो सिमिलरली AI also have a lot of simulation labs where you can go and practice it out. That will be someone for someone who is intermediate or like an expert level, going to that level, who can start practicing it at the hands-on level. So once you have done these kind of practices, then I will suggest that best way is to maybe do some hands-on projects. Now, hands-on projects is two ways. Either you get an opportunity to do it something in your own organization, or maybe if that is not the case, then you can actually look out for these bug crowd or HackerOne kind of a platforms. And there are a lot of companies, AI-based companies, who are listing their websites for the AI pen testers also nowadays, right? So you can use those opportunities to try your hands-on. Best case scenarios, you will be able to file some bugs as well as it will get you recognition or some monetary rewards. So you will have a win-win situation to test your skills, at the same time add on those badges in your CV also. So I think that is like a perfect roadmap which I can share with you. थैंक यू सो मच निखिल, आपने इतना बड़ा एक्सपीरियंस अपने हमारे साथ शेयर किया, इतना लर्निंग अपनी बताई, और कैसे कैसे आप इस सिक्योरिटी डोमेन में आगे बढ़ सकते हैं, आप मेरे व्यूअर्स को बताया. थैंक यू सो मच. Thank you. Thanks, Nitish, for inviting me. And thank you, everyone, for watching this. I'm really glad I can share whatever I have learned from my experiences so far. आई होप आप सबको आज का पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी वैल्यूबल लगा होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा. सो अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता हो प्लीज़ लाइक करें, और भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. अगर या फिर कोई चीज़ रह गई हो या फिर इम्प्रूव करना हो, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो. मैं सारे कमेंट सबको रिव्यू करता हूँ. अगर किसी को मेरे से 1-to-1 सेशन करना हो तो नीचे टॉपमेट की लिंक दे रखी है, वहाँ पे आप मेरे से सेशन बुक कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी. थैंक यू.